डियर स्टूडेंट, आई होप दैट आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा. टुडे वी हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस दे आर आस्क्ड इनटू द नीट एग्जामिनेशंस chapter number first of class 11 physics, that is units and dimensions. So now here we solve the MCQ on the topic name is relative error. So let's we start. So the question is asked into the NEET 2019 examinations. So what is given? The experiment. In experiment, the percentage error occurred in the measurement of physical quantities A, B, C, D are the percentage error are given, that is 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Then the maximum percentage error in the measurement of X will be. So now here the formula is given. So X is the physical quantity. In that X physical quantity, there are the other physical quantities, that is A, B, C, D. And now we have to calculate how much percentage error. So first of all, we have to write down what is given. Now here the percentage error in terms of the physical quantity A, B, C, D are given. So first we write down the given data, then we go for the formula. So what is the percentage error in A? So percentage error in A is given. So that is delta A divided by A into 100 is equal to how much given? 1%. Next, the percentage error in B, so that is delta B divided by B into 100. क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सिमिलर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया ऑलरेडी इन जेई एग्जामिनेशंस में. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो आपको देखना है अच्छे से, ताकि यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन दे आर आस्क्ड इनटू द रिलेटिव एरर्स जेई एग्जामिनेशन में. And now we solve the question asked into the NEET examination. So what is the percentage error for BCD? That is 2, 3, 4 respectively. So that is 2%, 3% and 4% respectively. So we have to write down what is the maximum percentage error. Percentage error for the measurement of quantity X. तो कैसे लिखना है? बहुत सिंपल है. That is delta X divided by X into 100 is equal to. So how many physical quantities are given? A, B, C, D. So first physical quantity का percentage लिखेंगे हम, that is 2 into delta A divided by A into 100 plus next half delta B divided by B into 100, next 1/3 delta C divided by C into 100, next 3 into delta D divided by D into 100. So in such way that we write down the formula. The formula is very easy. कैसे solve करना है इसको? So write down the relative error in terms of A, delta A by A, percentage में लिखना है. For B, delta B by B. For C, delta C by C. और for D, delta D divided by D. और what we have to remember, very simple, whatever may be they are in product or division, सबका addition लेना है. और most importantly, A physical quantity का power है 2, so 2 से उसको multiply किया. B physical quantity का power है 1/2, so we multiply by 1/2. Then C physical quantity का power है 1/3, so इसलिए हमने multiply किया 1/3. And the last one, that is D physical quantity having power is 3, so therefore we multiply by 3. So very question easy है. So then substitute the percentage error in terms of A, B, C, D. So what we get? 2 multiply by. So for A का आंसर है 1%. Then for B that is 2%. Then for C that is 3%, and then for D, so that is 4%. So it becomes 3 into 4. Bracket complete. All over bracket, that is we have to calculate in terms of percentage. So आपको जल्दी से calculate करना है, बहुत easy. So tell me what is the answer? 2 ones are 2. After that 2 get cancel, it becomes 1. 3 get cancel, it becomes 1, and 4 3s are 12. So count करना है इसको. 12, 13, 14, 15, 16. So it becomes 16%. So in such way that we solve the question of relative error का हमने question solve किया. तो question उन्होंने पूछा है NEET 2019 में. सिमिलर क्वेश्चन दे आस्क इनटू द जेईई एग्जामिनेशन. अभी तक आपने देखा नहीं होगा तो प्लीज जाके वो प्रीवियस वाला वीडियो देखना है, ताकि आप अच्छे से समझ जाओगे कि रिलेटिव एरर पे कितने क्वेश्चन पूछे गए जेईई एग्जामिनेशन में. और इन सच वे दैट वी कैलकुलेट. वेरी सिंपल है, क्या याद रखना है? वॉट एवर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सबका सम, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी फिजिकल क्वांटिटी उसके पावर से उसके रिलेटिव एरर को या परसेंटेज एरर को मल्टीप्लाई करना. वेरी सिंपली टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी गो फॉर द second question next. So the next question is again asked into the NEET 2013 examinations.
So 2013 में पूछा है, question is very easy, we have to read. In an experiment, 4 quantities are given, so that is A, B, C, D are measured with percentage error. सबका percentage error दिया है 1, 2, 3, 4 percentage respectively. Then the quantity is given and what we have to calculate the percentage error in the physical quantity P. So first of all we write down the given data. So that is delta A by A into 100 is equal to how much percentage? 1%. Then delta B by B into 100. बहुत आसान है, आप इसको अच्छे से कर सकते हो. तो बोर्ड की तरफ ध्यान देना है और ट्राई करना है कि आप खुद भी इसको सॉल्व कर पाओगे. सो वेरी सिंपल. व्हाट इज द परसेंटेज एरर? 2%, 3% and then 4%. Then we have to calculate the percentage error in terms of the quantity P. So what is the formula? That is delta P divided by P into 100 is equal to first quantity delta A by A into 100. So second physical quantity आपका, so multiply by power, so it becomes 3 into. Next है 2 times delta B divided by B into 100. Next is C, that is 1 times delta C divided by C plus last one 1 times delta D divided by D, bracket complete percentage, substitute the numbers. We already now written the given data, so substitute the value of, so it becomes that is 3 into 1 for B, that is 2. So now here 2 into 2, next for 1 into and then 1 into. So for error for C and D are 3 and 4% respectively, 3 and 4. So bracket complete. So calculate करना इसको बहुत आसान है calculate करना, ये तो calculation बहुत easy. 3 1s are 3, 2 2s are 4, 3 1s are plus 3 and then 4 1 4s are that is 4. So make the addition. So what is given? 3 plus 4 that 7, 3 plus 4 7, 7 plus 7 that is 14%. So in such way that we calculate the question asked into the NEET 2013 examinations. So इसका option है that is 14%. So A option is correct. प्रीवियस का हमने टिक किया था ऑप्शन, ओके 16%. सो ये रह गया था, ठीक है. सो इन सच वे दैट वी सॉल्व द क्वेश्चंस दे आर आस्क्ड इनटू द नीट एग्जामिनेशंस. और टॉपिक है रिलेटिव एरर. सो अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, राइट डाउन करना है, फार्मूला रिमेंबर करना है. फार्मूला बहुत ईजी है. फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में हुआ है, डिवीजन में हुआ, सबका एडिशन लेना है परसेंटेज एरर का. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी फिजिकल क्वांटिटी का पावर है उसको मल्टीप्लिकेशन में लेना है. सो नाउ हियर वी राइट डाउन बाय 3 2 1 1. So in such way that we complete the question they ask into the relative error. So we go for the next topic, that is next MCQ. So the MCQ is asked into the again NEET examinations. NEET 2020 का question है. Question बहुत easy है. So what is given? Screw gauge as a list count. उसका list count दिया है उन्होंने 0.1 mm. And there are the 50 divisions in its circular scale. So what is the speech of the screw gauge? So both simple, how to calculate the speech of the screw gauge? So we can calculate the speech of the screw gauge is equal to the speech of the screw gauge we can calculate is equal to, so that is the list count, remember the formula, multiply by number of divisions on the circular square, that is number of divisions on circular scale, number of division on circular scale. So both simple formula इसका. So after that, so multiply 0.01 and then how many divisions? 50. So what we get here, 1 0 get cancelled, it becomes 0.5 and what is the SI unit? That is mm. So this is the answer of the pitch of a screw gauge. So now here option B is the correct. We get the 4 marks. We solve the NEET 2020 examination. बहुत easy question पूछा था, अच्छे से इसको फार्मूला याद रखना है आपको and then you can calculate the question. We go for the next. Next question is बहुत simple है. So taking into account of significant figures, you have to must remember the rules of significant figures and then what is the value of. So हमें एक number दिया है, उसका value calculate करना है. There are the 4 options are given and the question asked into the NEET 2020 examination. So बहुत simple question है. So first we have to calculate the subtraction. हमें क्या करना है, पहले हम calculate करेंगे subtraction between those numbers. So what is the first number? 9.99. Second number is 0.009 into 9. So make the subtraction between them. So what is the subtraction? जल्दी calculate करना है. Now here 0 0. So it becomes 10. 10 minus 9 1. It becomes 10 minus 10 0.
then it becomes 9 minus 1, it becomes 8, and then it becomes the 9, and then it becomes the, okay, so we get the number 9.9801. So what we get the number? 9.901. So this is the number we get, and look at the options. So now the option is given, but it is not your answer. Why it is not your answer? Because they clearly mentioned that according to the account of significant figures, so हमें significant figure का यूज करना है और उसके हिसाब से उसका आंसर बताना है. ये तो करेक्ट है. Now the answer is correct according to the solution. हमने simply subtraction किया और number लिया, लेकिन उन्होंने simply subtraction पूछा नहीं. इतना easy तो वो पूछ नहीं सकते. The question of NEET 2020 अगर इतना easy पूछेंगे तो फिर हर कोई बंदा MBBS बन के डॉक्टर बन जाएगा. ओके तो थोड़ा ट्रिकी है, तो आपको पता होना चाहिए द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. सो अकॉर्डिंग टू दैट रूल आपको अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर द डेसिमल? दिस इज योर डेसिमल पॉइंट. दिस इज योर डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के इस साइड में हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 1 and 2, दैट इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल पॉइंट के. और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? उतना भी डेसिमल पॉइंट के आफ्टर दैट डेसिमल पॉइंट हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2. सो जो भी आंसर आया है उसका भी सिमिलर रूल हम अप्लाई करेंगे. आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वी काउंट ओनली 2 significant figures, so therefore our number become 9.98, and now we get the option A is correct answer of the given example, and we get the 4 marks. So in such way that we calculate the question that is asked into the NEET 2020 examination. So take the screenshot of the given example. Now we go for the next. The next question is बहुत easy है. NEET में इतना simple question पूछा उन्होंने. So what are the dimensions of stress? तो आपको पता होना चाहिए what is meant by stress. So simple है. Stress means, so remember the formula of stress is equal to, we know that अगर हम रबर को फोर्स अप्लाई करेंगे तो इजीली एक्सटेंशन हो जाएगा. But when we replace the rubber by using the metal, so what happened? I applied the force, but there is no extension of the metal. Why it is not happening the extension of the metal? Because remember that every material having on its internal strength, it has an internal resistance. So internal resistance offered by that material, it is called stress. And how to calculate that stress? That is internal restoring force. That strength, it is called internal, remember the formula, internal restoring force divided by area. So now it is denoted by letter sigma. Sigma equal to force per unit area. So tell me the SI unit. तो ये तो बहुत सिंपल है. You can calculate the SI unit of stress. The force calculate in Newton, and area क्या आएगा? area का आएगा Newton per meter square. So then we can calculate the dimension. What is the formula of force का dimension? m1 l1 t minus 2. Remember we calculate by using force equal to mass into acceleration. Mass का unit है kg, acceleration meter का second square. So m1 l1 t minus 2. So after that what is the SI unit of area? That is l square. So आपको simply इसको कट करना है. L1 डिनोमिनेटर में रहेगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. So it becomes m1 L minus 1 T minus 2. So in such way that we calculate the dimension formula for the stress. और क्वेश्चन कहाँ पे पूछा उन्हें? NEET 2020 एग्जामिनेशन में. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है. So what our options is correct? That is m1 L minus 1 2 minus 2. So our C option is correct of the given examples. So take the screenshot of the given example. So we go for the next. So next question is again the question asked into the NEET 2020 examinations. Question बहुत easy है. So what we have to calculate? The angle in radian is nearly equal to. So angle in radian is nearly equal to. आपको फार्मूला पता है? बहुत simple फार्मूला है. What is the relationship between the minute in terms of degree? Can you tell me the relationship between the minutes in terms of degree? Anyone can tell me? So that is, remember it becomes 1 by 60. So 1 minute equal to 1 by 60 degree, and we have to convert in terms of radian. So radian, degree to radian conversion कैसे आएगा? degree to radian conversion pi divided by 180. Pi divided by 180. So this is the formula. You have to remember how to convert the degree in terms of radian. So what is the formula of
degree in terms of radian, 1 degree equal to, so that is pi divided by 180 into radian. So in such way that we convert. So calculate करना है, what is the value of pi, that is 3.14, सबको पता है number 60 multiply by 180. So क्या number बनेगा, 108 multiply by 10 raised to 2, ये 0 और ये 0, both 0 becomes 10 raised to 2, उसको ऊपर लेके जाना है. So क्या आंसर आएगा उसका, और इसको भी डेसिमल में लिखना है, 314 इंटू 10 raised to -2, और ये +2, जब भी न्यूमरेटर में जाएगा तो उसका साइन कन्वेंशन चेंज होगा, इट बिकम्स -2, अकॉर्डिंग टू विच फार्मूला, a raised to n इक्वल टू a raised to -n. सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमने इसको सॉल्व किया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 raised to -2 और -2, इट बिकम्स 10 raised to -4, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट दिस रेशो. सो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्वेशन करोगे तो बस ये दो ही पॉसिबिलिटी, 10 raised to -4 और व्हाट वी गेट 108 डिवाइड द 314. सो आपको कैलकुलेट करना है 108 314, so it becomes 2. What is the number of 108 multiplied by 2? It becomes 216. So now we get the answer, that is 2 point something. So what is the number of 2 point something? So option A is our answer of the given example. बहुत सिंपल है, आपको अच्छे से इसका कन्वर्जेशन याद रखना है. 1 minute equal to 1/2, 60 times degree. How to convert degree in terms of radian? That is multiply by pi by 180. और बस ये तो आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है. Anyone can calculate and we get the 4 marks. The question is asking to the NEET 2020. So अच्छे से प्रैक्टिस करना है. अगर कुछ डाउट आएगा तो मुझे पूछना है. You can text me. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबको लाइक जरूर करना है और कमेंट भी करना है अगर कुछ डाउट है या फिर वॉट एवर. नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. सो रिमेंबर, थर्मल कंडक्टिविटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी. According to that, the number we can say that the material having the largest amount of heat transfer rate take place. So NEET 2020 में क्वेश्चन पूछा है. सो अगर हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज इन बाय थर्मल कंडक्टिविटी, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी एक सब्सटेंस है वो कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर करेगा. सो वेरी सिंपल, दैट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एरिया एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट. टेम्परेचर ग्रेडियंट, और यहाँ पे जो भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बनेगा that is k into a delta t divided by delta x. तो मैंने साइन कन्वेंशन लिया नहीं है. So what is delta q divided by delta a? That is heat transfer rate. So SI unit is joule per second. What is meant by k? K means thermal conductivity. Thermal conductivity. We have to calculate the SI unit of that thermal conductivity. Next, A for area and delta T by delta X means temperature gradient. Temperature gradient. What is the meaning of temperature gradient? Means the change in temperature with respect to distance. Change in temperature with respect to distance. So इसका यूनिट बनेगा जूल, सॉरी, टेम्परेचर मेजर इन केल्विन. सो दैट इज केल्विन पर मीटर, ये उसका यूनिट बनेगा. एरिया का तो यूनिट सबको पता है, मीटर स्क्वायर. So according to that, so what we get? So very simple, or most importantly, joule per second means watt. So यहाँ से हमें फार्मूला बनाना है, k इक्वल टू dq by dt on divided by a into delta t divided by delta x. So dq by dt, what is the SI units? Watts. एरिया का मीटर स्क्वायर और केल्विन पर मीटर. 1 मीटर गेट कैंसल, इट बिकम्स वाट डिवाइडेड बाय मीटर केल्विन. दोनों यूनिट को ऊपर लेके जाओ, दैट इज वाट. मीटर रेज टू -1, Kelvin raised to -1. So now this is the SI unit of thermal conductivity. So which option is correct? C option is correct. So in such way that we complete the near equal to 6 or 7 questions, and they are asked into the NEET examination. I hope आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत बेसिक और सिंपल क्वेश्चन थे. अगर ऐसे आपको अगर ज़्यादा वीडियोस देखने हैं, फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ यू कैन लाइक, सब्सक्राइब and comment on that channel. अगर आपको कुछ टॉपिक में डाउट है, so please text me, I will make the video on that topic also. The most importantly, I hope that आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा. अच्छे से प्रिपेयर करना है, रिवीजन अच्छे टाइम्स करना है, ताकि आपका जो मार्क्स का जो काउंट होगा वो बढ़ जाएगा. So in such way that we complete some example, they are asked into the NEET examinations. So I hope सभी को समझ में आया होगा. Thank you very much.